Hello everyone, how are you all? I am really great to see you. Okay, let's see. Avirul, I saw a lot of messages on live chat for Avirul and I'm really grateful to have student like you. And let's start the session. Okay, we are on and today's session is most awaited, most requested and all of that because today is duck hunt working part. Last time I told you बहुत लंबा project है, so we are going to be slow and I am going to give you some time to figure it out by yourself, which you did. And I got a lot of requests for this session, so here I am. Welcome back to Coding Blogs Junior. I am Vasundhara Sharma, your mentor. And how are you? I'm really great, Ananta. How are you? Hi, Aryan. Aryan, coding and magical word. I really like when you to take coding so seriously and passionately. And I'm sure it is going to give you a lot in your life. जब आप किसी चीज को इतना कुछ देते हो तो वो भी रिटर्न में देती है, राइट? तो हम कोडिंग को जितना टाइम देंगे वो भी रिटर्न में हमें बहुत अच्छा स्कोप और रिटर्न देगी, है ना? Okay, I have to like thank you, Viren. I have to call it out. It's really great to see students like that. Aryan, I am really great, Aryan. How are you? Hello, Shaurya. Start करें? Ananda is good. Keep going. Let's start. Keep going is saying let's start. So let's keep going. Okay, चलो. मेरे को बताओ सबसे पहले who has done the part 1 of this duck game? Who has done it? And उसके बाद हम अब पार्ट 2 करने वाले हैं एंड एज आई टोल्ड यू ये काफी लंबा जाने वाला है, सो लेट मी जस्ट रिवाइज इट फॉर यू गाइस. व्हाट वी डिड लास्ट टाइम वाज this, right? So let me show you the beginning and the end and where we was and where we are going to do all these things. ध्यान से देखना. I want you to be creative on this one. This thing we did, इतना हमने किया था, right? एंड ये भी किया था कि हमारा डक आ रही है वो लेफ्ट एंड राइट कैसे जा रही है, ठीक है? इसके आगे हमें क्या करना था? आई नीड टू शूट इट, ठीक है? वो लेफ्ट एंड राइट जा रही थी, इतना हमने लास्ट टाइम कोड किया था. नाउ इफ आई जस्ट शूट इट, वेस्ट हो गई मेरी बुलेट एंड लेट मी जस्ट शूट इट. Okay, my god. Okay, now I did it. So you saw all the animation I did. जब वो kill हो गई, then it is turning and moving down. उतना हमें करना है. अभी तक हमने क्या किया है? हमने इतना किया है that we have done this animation. है ना? We have done this much animation और ये पूरा एसेट मैंने आपको दे रखा है, पिछली वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में है, डिस्कॉर्ड पे भी है, इसमें भी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी. डिस्क्रिप्शन से याद आया, टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड चैनल के लिंक आर इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप बिल्कुल ज्वाइन करो बिकॉज आई विल सी योर प्रोजेक्ट ऑन डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम ओनली. और कोई रास्ता नहीं है आपके प्रोजेक्ट्स देखने का एंड आई रियली वांट टू सी योर प्रोजेक्ट्स. चलो इतना कर दिया था एंड देन हम आगे करते हैं. आगे का हमारा काम क्या है? लेट्स मेक एन एल्गोरिथम फॉर इट. लेट्स डिसाइड व्हाट वी वांट टू डू. फर्स्ट ऑफ ऑल माय दिस डिजाइनिंग इज डन, राइट? डिजाइनिंग हमने कर लिया है प्रॉपर. हमारा डक मूव कर रहा है, हमारा डॉग आके एनिमेट होके वो चला गया. नेक्स्ट वी वांट टू शूट इट. Okay, let's shoot the duck. उसके लिए हमें क्या करना है? We need a target. Okay, हमारा टारगेट मूव करेगा ऑन माउस, ठीक है? एंड जब माउस क्लिक करेगा एंड डक टच हो रहा होगा, then only on this condition only, if mouse is clicked and duck is touched, then only we want the duck to die or to fall.
है ना. देन वी वांट द डक टू फॉल. अभी फॉल कब नहीं होगा वो, जब हमारा माउस तो डाउन होगा, मतलब कि इफ माउस इज डाउन. डाउन का मतलब क्या है, जब हमने वो क्लिक किया, तो क्लिक को हम दूसरे शब्दों में माउस डाउन भी बोल सकते हैं. इफ माई माउस इज डाउन एंड डक इज नॉट टच. अगर ये वाली कंडीशन हुई तो क्या होगा, तो हमारा फॉल नहीं होना चाहिए, है ना. फॉल नहीं होना चाहिए, सिर्फ साउंड आना चाहिए शूट का. एंड वो जो हमने शॉट्स रखे हैं ना, 3 शॉट्स होने चाहिए, उसमें से शॉट में से -1 हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने क्लिक कर दिया और हमारी बुलेट वेस्ट हो गई, है ना. लेकिन शॉट -1 तो यहाँ पे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, नो नहीं होने चाहिए, बिकॉज वो मर ही गया. तो फिर हमारा नेक्स्ट गेम स्टार्ट होगा, यहाँ पे साउंड होना चाहिए. ओके, सो ये चीज आ गई हमारे पास टारगेट में. टारगेट में वी जस्ट वांट टू हैव अ साउंड, और टारगेट के साथ ये वाली कंडीशंस होंगी हमारी फॉर श्योर. ओके, अब मेरे डक के साथ क्या होना चाहिए, डक के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट समथिंग जिसमें हम ये बता सकें कि हमारा जो डक है वो शॉर्ट हो गया कि नहीं, है ना. ये जो शॉर्ट्स मैंने बोला, शॉर्ट्स -1 हो जाएंगे, तो ये शॉर्ट्स हमें क्रिएट करने पड़ेंगे. सो वी नीड टू क्रिएट शॉर्ट्स. अभी 2 होंगे शॉर्ट्स के चीजें. ये तो होगा बुलेट शॉट, कि बुलेट कम हुई कि नहीं, एंड ये होगा डक शॉट, कि डक को शॉट किया कि नहीं. ओके, तो अभी डक में हमें क्या करना है, यहाँ पे व्हेन माय डक इज बेसिकली शॉर्ट हो गई है ना, तो वेरिएबल को हम +1 कर देंगे. अब इस पे हम आगे कंडीशन बना सकते हैं. जब मेरी डक शॉर्ट हो गई है, तो मैं अपने डक को लाइक कॉस्ट्यूम चेंज कर सकती हूँ. वो नीचे जाने वाली, वो नीचे गिर रही है, और जब वो ग्रास पे टच हो जाती है, तो हमारा डॉग, है ना, वो निकल के आके हंसेगा. ओके, ये बेयर बन गया. तो ये हमारा सॉर्टेड एल्गोरिदम है जो हमें करना है. और दूसरी चीज जो हमें करनी है यहाँ पे, वो है मेरे डक को अच्छे से मूव करना. अभी क्या हो रहा है, ये बहुत सिंपली डक को देखना. अभी तक हमने डक के लिए क्या किया, वो सिर्फ लेफ्ट एंड राइट जा रही है, सिर्फ लेफ्ट एंड राइट जा रही है. जैसे ही वो एच से टकराती है तो वो टर्न हो जाती है, दैट्स इट. वो ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रही है, और इस टाइम पे से शॉर्ट करना बहुत इजी होगा. तो अब जो हम कोड करने वाले हैं वो काफी लेंथी होने वाला है, और हमें उसको समझ के करना है, क्योंकि इजी भी बहुत होने वाला है, इजी एंड लेंथी. लेट्स स्टार्ट. आर यू रेडी? तो पहले से समझो, फिर इसे देखना स्टार्ट करना, ठीक है. और कोई टेंशन नहीं लेना, आप बना सकते हो इसको पूरा. आई प्रॉमिस दैट कि आप बना सकते हो, तो बीच में तो बिल्कुल नहीं छोड़ना इसे, ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. एंड यहाँ पे हाय भावेश, अनंता हैज डन पार्ट 1. ओके ओके, ईस्ट और वेस्ट, सीबी इज द बेस्ट, ठीक है. चलो आगे करते हैं इसको. हमें क्या करना है, लेट्स डू वन थिंग. ये जो हमारा डक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको कहीं पे भी मूव करा देना है. कहीं पे भी का मतलब ये है, अभी इसका डायरेक्शन देखो, इट इज -90 एंड नाउ इट इज 90, ठीक है. दिस इज 90, इसका x चेंज हो रहा है, y इसका सेम है, ये पूरा मूव कर रही है, इसका y सेम है. अब ये देखो, ये -90 हो गया. दैट मीन्स इसको मूव करने के लिए हमें डायरेक्शन से खेलना पड़ेगा. क्यों ना हम इसका डायरेक्शन एक रैंडम दे दें. हम कंप्यूटर से बोल दें कि एक इतने से इतने नंबर के बीच में कुछ भी रैंडम डायरेक्शन आप चूज कर लो, तो हमारी डक उस डायरेक्शन में मूव करने लगेगी, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट. स्टार्ट करते हैं इसको बनाना. फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट, इसको छोटा कर देते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट इवेंट, और इवेंट होने वाला है हमारा गेम स्टार्ट. ये रिवाइज करना सब लोग. गेम स्टार्ट इवेंट हमने बनाया था, जो हमारा डॉग लाइक आके चला गया था, तो हमारा गेम स्टार्ट होगा. So I'm just taking that event. Let me just switch it.
जल्दी से वो इवेंट ले लेते हैं. when when where is my event? Here it is. When game start. उसके बाद we want to basically make it switch the directions. और मैंने कहा था एक रैंडम चीज ले लेते हैं. तो एक काम करते हैं, एक वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं which will be of direction. ओके, और हम कुछ नंबर असाइन कर देंगे इस वेरिएबल को, कुछ रैंडम नंबर्स, और उनके ऊपर हम खेलेंगे. कैसे? लेट मी शो यू. लेट्स टेक अ सेट डायरेक्शन and we are going to have a random number for it. So I'm going to pick 1 to 4 because there are 4 direction, east, west and north, south. तो अब हम कोई भी डायरेक्शन लेंगे और हर नंबर को हम एक डायरेक्शन असाइन कर देते हैं. गेटिंग इट? तो हम हर एक नंबर को एक डायरेक्शन असाइन कर देंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और हम कंप्यूटर से एक रैंडम नंबर चूज करवा लेंगे हर कुछ सेकंड में. तो जैसे अगर उसने 3 नंबर चूज किया, लेट्स सी, देखो यहाँ पे 7 आ गया, दोबारा चूज करेंगे 1 आ गया, तो ये कंप्यूटर कुछ भी चूज करता है. तो यहाँ पे भी अगर उसने हमारा 3 चूज किया तो हम कह सकते हैं कि जो भी इसको असाइन करिए डायरेक्शन वो आ जाए. स्टार्ट करते हैं. ठीक है. नाउ इफ एक सेट डायरेक्शन कर दिया एंड रैंडम नंबर कर लिया. ओके, उसके बाद वी वांट टू हैव इफ कंडीशंस, एंड इन इफ कंडीशन वी आर गेटिंग अ स्टेटमेंट कि इफ my direction is equal to 1, this is my equal operator and I want to write 1 for it, and I want to have direction. Direction कहाँ से आएगी? Direction is in this variable. ये हमने जो अभी भी बनाया है. तो मेरा अगर वेरिएबल 1 है तो मैं अपने डक को पॉइंट कराना चाहती हूँ. लेट्स सपोज इन 90 है ना, ईस्ट में कराते हैं पॉइंट. So east is our 90, so I'll just ask it to point in 90 direction. ठीक है. अब ऐसे हमें चारों चीजों के लिए करना है, तो हमने if स्टेटमेंट लिया. Why not let's take it if else स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ एक काम नहीं कराना, हमें एक से ज्यादा कराना है. एंड एक से ज्यादा के लिए अगर 2 काम होते तो हम if else ले सकते थे, बट अगर हमारे पास 2 से भी ज्यादा काम है तो हम if else if लेंगे. और ये चीज मैंने अच्छे से पढ़ाई है अपने जूम बैचेस में, और जो मेरे से स्टार्टिंग से पढ़ते हुए हैं उन्हें अच्छे से पता होगा. सो राइट नाउ आई एम चेंजिंग दीज थिंग्स हियर. मैंने इफ ब्लॉक हटा दिया है एंड आई एम टेकिंग एल्स इफ. उसके बाद इसके अंदर में एक और एल्स इफ रखूंगी, क्योंकि एल्स अगर मैंने लिया तो वो वाला काम हमारा ऑप्शनल नहीं रहेगा, वो कंपल्सरी हो जाएगा. ये चीज अगर नहीं समझ आ रही तो मेरे से आप बताना. ओके, एंड सेम चीज मेरे को लेनी है. सो आई एम गोइंग टू डुप्लीकेट दिस ब्लॉक, पॉइंट इट हियर, डुप्लीकेट दिस वन, पॉइंट इट हियर, एंड इसको अगर मैं 2 कर दूंगी तो मैं यहाँ पे दूसरा नंबर दे सकती हूँ विच कुड बी -90. 90 हो गया, -90 हो गया. आई वांट टू हैव वन मोर इफ एल्स, एंड यहाँ पे अगेन से डुप्लीकेट, हैव इट हियर फॉर 3, एंड अगेन से डुप्लीकेट, हैव इट हियर for another direction which could be, let's suppose this is my 0 direction. ठीक है, ऊपर होगा मेरा 0 डायरेक्शन, तो आई एम गोइंग टू हैव इट 0 हियर, है ना. ये हो गया ऊपर 0 डायरेक्शन. ओके, नहीं, दूसरी जगह हो गया. यहाँ पे आई एम गोइंग टू हैव 0 डायरेक्शन. ठीक है, एंड देन इट कम्स फॉर फोर्थ के लिए क्या बचा? कौन सी डायरेक्शन बची? 180, नीचे वाली. So you can see 180 is done, मतलब साउथ इज डन एंड वेस्ट इज डन, ईस्ट इज डन और नॉर्थ इज डन. सारों डायरेक्शन हो गई. इसके बाद मैंने आपको कहा था ना कि इसको थोड़ा सा वेट कराना है हमें. तो ये जब कंडीशन चेक होएगी ना पूरी एक के बाद एक, तो आई वांट इट टू वेट अ फ्यू सेकेंड्स. एंड फ्यू सेकेंड्स भी हम खुद क्यों डिसाइड करें, हम कंप्यूटर को दे देते हैं रैंडमली चूज करने के लिए. सो वी कैन टाइप इट सम लाइक हाफ सेकेंड से लेके हाफ सेकेंड, दैट 0.5 सेकेंड से लेके मे बी 3 सेकेंड तक वो वेट कर सकता है. लेट्स टेक अ वेट ब्लॉक, वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, इस पूरी कंडीशन को दोबारा चेक करने के लिए.
और ये कंडीशन हो रही है एक और कंडीशन पे, और वो कंडीशन क्या होगी कि अगर वो एज को टच नहीं कर रहा और अगर वो ग्रास को टच नहीं कर रहा, ग्रास को वो कब टच करेगा, जब वो डाई हो जाएगा, ठीक है। So we need to make one more if condition, that will be if it is not touching, if it is not touching, let's take not operator and operator and not operator. ये क्यों? क्योंकि हमें दो चीज चेक करानी है कि वो ग्रास भी टच ना करे और वो एज भी टच ना करे. इट शुड नॉट टच. जब भी ये काम कराना है ना, हमें वो काम तभी होना चाहिए when the it is not touching grass and it is not touching the edge. So touching is my here, and here I can take this touching block and I can have grass. So मैंने यहाँ पे grass को नाम नहीं दिया है for now, and I can see कि grass क्या है, this is here. So I can rename it from here. ठीक है, मैं इसको रीनेम भी कर सकती हूँ ऐसे. Grass. Okay, and I can also rename the other thing if not here. And then हमें same चीज लेनी है. We want to take same thing for the edge. That's it. तो ये कंडीशन हो गई. Now also हम डक शॉट के बारे में भी बात कर रहे थे, पर वो हम आगे कंडीशन ज्वाइन करेंगे. Let's test this much if it working or now. देखो मैंने क्लिक किया, it is changing its direction. वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं. Okay, how can we check these things here? Look at this direction point. Okay, if I click, this will run and it will change the direction. It is minus 90 now, minus 90 again. It is 90 now. So it is random. Computer check करेगा. ठीक है, run करके देख लेते हैं. Direction is 1 for now. You can see. It's 3 and it will change accordingly to the time given. Okay. All right. Next, what we want to do, we want to shoot it. Let's code for it. Now, first of all, let's code for this target. Target के लिए हमें क्या करना है? We want target move करे हमारा mouse के साथ. So we can take this forever loop. We can take this go to location, and we can take the what else is left. Because we want it to move with the mouse location, then we can take the mouse X and mouse Y, and it is found in sensors, mouse X and mouse Y. There are two methods to code it. You can also have set location, set X and set Y, and put mouse X and mouse Y. So there are two methods to do the same thing. You can adapt any. Let's see. My target is moving. Damn right. Now मेरे को आगे कोड करना है कि जब मैं क्लिक करूं, when I click on this one, what should happen? Oh, we need to do one thing here. यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो सेट डायरेक्शन हमने ऊपर रख दिया, इसको क्या करना है, मेरे को अंदर रखना है ना, क्योंकि what will happen, ये जब कोड ओवर हो जाएगा, ये वापस से ऊपर जाएगा and it will check this condition and it will change this one. Now this will happen again and again. है ना? Now you can see this direction is changing. So we have corrected this thing right here, and my this pointer is also moving. Next we can do one thing कि जब हमारा mouse down हो, we can have forever loop again. Let me duplicate this thing. When my mouse is down, so we have to check this thing. और mouse down कैसे होगा? We can have a if condition. If my mouse is down, which is a sensor,
So if my mouse is down, that means मैंने click किया है, और click किया है तो एक short की आवाज आनी चाहिए. Let's see, I have this. This is the short voice. तो मैं यहाँ पे start voice कर सकती हूँ. Let's get to the sound and I can just start this sound. It's coming. It's coming. Okay, that's done. Okay, and then हमें काफी चीजें include करनी है if we are going to have shorts, और ये इसके लिए अभी हमें कोड करना है. For now, let's work for the duck. इतना समझ आया? जब भी हमें randomly move कराना होता है, then we write this code right here. Oof. Next, let me see your live chat and किसी को कोई डाउट है क्या? How to log in Discord? See, Avirul, Discord पे log in करने के लिए you have to verify your phone number. So when you download Discord, sign in with the ID and verify the phone number. It is for the safety of students. Okay. And आप या Telegram भी कर सकते हो. Hi Diva, how are you doing? It's long time. Ananta, which code? Hi Satvik. Which code, Ananta? Karthik. Ji, Karthik sir. Okay. Okay. So now this is done, and what we need to do next is कितना बढ़िया हमने last code of duck. Okay, duck is this much only. What we did right now is to add a condition here. If my duck is not touching grass, grass is this. Okay, grass is this. ये वाला sprite. इसको अगर टच नहीं कर रही और वो एज को टच नहीं कर रही, तभी ये रैंडमली कहीं पे भी मूव करना चाहिए. अब हम इसे रैंडमली मूव इसलिए करा रहे हैं ताकि ये स्पॉन्टेनियस गेम रहे. मेरे शूटर को पता ही ना चले कि मेरी डक कहाँ मूव कर रही है, एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग गेम. सो वी आर मूविंग द डक इन अ रैंडम डायरेक्शन. This is done. Let's work for the shooting purpose. Now if like what should done here, when my target is touching duck and my mouse is down, these two conditions we have to check if we want to make the duck fall. I told you, right? यहाँ पे हमने बताया था, अगर मेरा क्लिक हुआ और डक को टच हुआ, then only fall. अगर मेरा माउस क्लिक हुआ और डक टच नहीं हुई तो सिर्फ साउंड आना चाहिए, right? So let's make a condition for that. We want to have a event, and the event could be when this sprite is click. Okay, when this sprite is click, we can change costume in that, and we can have one more event which is the game start. Okay, at this event we have to check if it is, अभी मैंने आपको बताया है ना, if it is like clicked and not touching. So I'm going to have controls, I'm going to have if condition, and I'm going to have and condition, and I'm going to have, I think that's it. Okay, now we need to have sensors, and we need to have add if the mouse is down, if mouse is down and touching target, है ना? So I can rename this sprite as pointer, है ना? मैंने इसको pointer नाम दे दिया. Let's get back to it. If touching mouse and if touching pointer, where it is here, then only my duck should fall down, है ना? This should happen. So now what we can do, we can broadcast one more message here. We can broadcast one more message to make things simple. So we can broadcast a message which could be duck die, duck fall. ऐसा कुछ हम दे सकते हैं, like duck fall. ये हो गया मेरा एक ब्रॉडकास्ट. अब इस ब्रॉडकास्ट पे क्या होना चाहिए? When my duck is fall,
तो हमारा स्कोर बढ़ जाएगा, ठीक है। स्कोर का काम वहां पे आएगा, व्हेन माय डक इज फॉल, तो हमारा स्कोर बढ़ जाएगा। लेकिन अभी डक फॉल वाला हमने एनिमेशन नहीं बनाया, लेट्स मेक दैट एनिमेशन। नाउ व्हेन इट इज शॉर्ट, आई हैव अ कॉस्ट्यूम हियर फॉर शॉर्ट एंड आई हैव रीनेम इट एज वेल। तो ये मेरा कॉस्ट्यूम है शॉर्ट वाला और ये मेरा कॉस्ट्यूम है फॉल वाला। सो वी आर गोइंग टू कोड फॉर दिस वन। तो वी आर गोइंग टू हैव दिस शॉर्ट costume here, ये आ गया मेरा शॉर्ट कॉस्ट्यूम। एंड देन आई वांट टू मेक इट पॉइंट इन द 90 डिग्री, ओके, क्योंकि वो सीधा रहे, ओके। वी वांट इट इन 90 डिग्री back to its original direction. This is done. Then we broadcast, we have already broadcasted it here, है ना। and what we can do, repeat until we need a condition। हमें अब अपना ना ये जो है डक, इसको फॉल कराना है ना। एंड फॉल कराना है, दैट मीन्स हमें इसका वो चेंज करना है, y position। we need to change the y position of duck and we will do it on this broadcast, but we also want to change the costume, so we are going to have repeat until the grass is touch। हमें ये काम जब तक करना है जब ये ग्रास को टच नहीं कर लेती, मतलब नीचे गिर नहीं जाती, ओके। और हमें क्या करना है, सिंपल, वी वांट टू चेंज द कॉस्ट्यूम, इट इज इन लुक, स्विच कॉस्ट्यूम to fall one, wait for a second, and then switch costume to fall two. So it will happen on repeat until it is touching the grass, okay। आज के लिए आई गेस हमें इतना काफी है करना, काफी लंबा सेशन पड़ जाएगा। इसके आगे काफी सारी चीजें हैं that we need to do today। what we did is to move my target and to shoot and to have a condition when to shoot, only shoot when we are touching this duck and like my shot are more than 0, ये हमें अभी कोड करना है। and it should fall down, काफी सारी चीजें रहती है। we have just done the second part of this game and the short score hit thing is left and the dog coming up thing is also left। so if you can do this thing ना, ये जो हमारा dog वाव ऊपर आएगा हंसता हुआ, you can, if you can code this thing, so I will be really impressed। let me show you how the dog came हंसता हुआ when we shot the duck। let me see if I can shot the duck right here। you can see the dog came and goes। so this is the code you need to do next and I'm going to have this much only। आज के लिए मैं बहुत हो गया इसको इतना करना। what do you think? I'm tired। I hope you are well and you can do this part really well। Hi Bhavesh, I'm good, how are you? live stream, I'm shooting game, Pradeep। I can live stream on BGMI if you want। if you want, you can play with me। I am a like super pro gamer in PUBG। we can also invite Kartik Sapras। okay, fine। yeah, the part 3 will also come if you request it in the comments below। so share this। yeah, part 3 is also coming up as well। so share this video and I want comments for part 3, then only the part 3 will come, okay। winners of the project I have told on the Discord, on the Telegram, on the Zoom session also। मैंने सारे में बताया। and Deepa, you are in the Zoom session? okay, then I guess there are no doubts left। if you have any doubts, you can ask me in the comments, and if you have more ideas on the project, you can tell me in the comments। I will definitely surely get it to you in the next session, definitely। okay, that's all for today। my MIT batch has started, so if you want to take part and learn MIT full course, बिल्कुल ऐप बनाना, चार्ट ऐप बनाना, उसको प्ले स्टोर पे शेयर करना। if you want to learn all these things, then you can fill the form which is down in the description and we can have a
batch started soon. Okay, that's it for today. Bye bye. See you soon.